We are now live. Okay, thank you. Assalamu alaikum and very good morning. I hope you all are safe and preparing and enjoying the blessing of Ramadan right now. हमने कैरियर जोन का एक पूरा सेशन और एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई थी. अपॉलॉजीज फॉर द लास्ट टाइम हम सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर रन कर रहे थे और उस दौरान में आई couldn't figure out that कि there was certain issue और हम उसको कंप्लीट नहीं कर सके. So आज जो हम सेशन रन कर रहे हैं इसमें we will be covering two career zones in fact. एक जो है वो डेटा नेविगेटर है और other one is the sustainability trailblazer. So if we can share the screen right now, Rashid. Great, thank you. So career zones, again, we are going, apologies for the date, but we are going for the data navigator and the sustainability trailblazer. Just giving you a quick background and the context around it. ACCA is almost 117 years old organization with 771,000 ACCA members and future members right now working across the globe, 10,000 plus practicing firm, 114 educational partnerships. That's been partnership with the universities. So we have got a good grasp what's happening in the education in journal, whether we are talking about the professional education or we are talking about the degree programs. Our presence is right now, our members are present in over 180 countries. Just going further on that, ACCA regularly generate professional insight where we try to answer today's questions and prepare for tomorrow. And that professional insights are available on ACCA global website and you can access it. It's free of cost, but it's provide a very good insight what's happening in the digital world, what's happening technically within the finance domain, whether we are talking about the accounting standard, auditing standards, and the development within the profession. It's also provide you insights around the economic agendas, like there's a regular survey, the quarterly economic condition survey, which provide you an overview and opinions that how people are feeling where the economy is going. And at the same time, you will have the digital agendas as well. You will have the technical side, you will have the economic side of it. And then there are other areas like we are talking about smart cities. And it's practically go beyond the accounting and finance and is try to evaluate and provide an insight that how the business, societies, and economies are going to move going forward. And what are the roles which, as a professional accountant, you can adopt from your career progression perspective, but more importantly, how you can contribute in that development and how you can make sure you stay ahead of the curve. A very recent the one of the professional insight that the future ready accountancy carriers in 2020s, that's mean we are talking about for the next 10 years. And there's a good insight coming from several senior leaders that what they feel accounting profession should be and how the accountants will be keep contributing in the societies and the businesses where they are engaged and where they are operating. ACC has identified broadly 5 career zones: the assurance advocate, the business transformer, the data navigator, the digital playmaker, and the sustainability trailblazer. So these are the core areas or a broadly defined career zone where the professional accountants are operating. एंड दिस कैरियर जोन आज अगर हम बात करेंगे तो हमने एश्योरेंस एडवोकेट पे एक सेशन कर लिया, बिजनेस ट्रांसफॉर्मर पे एक सेशन कर लिया, डिजिटल प्ले मेकर पे एक सेशन कर लिया और आज हम कवर करेंगे डेटा नेविगेटर एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर. और यही कैरियर जोन्स जो हैं इसके लिए सर्टन आपके पास एक यू नीड 7 की क्वेश्चंस एज वेल, जिसमें हम टेक्निकल और एथिकल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चन की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हाउ यू जनरेट द यूजर एक्सपीरियंस. इट्स नॉट द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस यू आर वर्किंग बट हाउ यू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी एंड योर स्टेक होल्डर्स और उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, व्हाट इज द विजन, हाउ यू विल रियली वर्क ऑन द डिजिटल साइड और आपका IQ लेवल जो है. ये सारी चीजें मिलके आपको एक इस कैरियर जोन में, जिस कैरियर जोन में भी आप ऑपरेट कर रहे हैं उसमें हाउ इट गोना हेल्प. इसके बाद कुछ बिहेवियर्स की बात होती है, जैसे लर्निंग एवोल्यूशन है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली लर्निंग. स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, अगर आपने एक स्किल एक टाइम पे एक्वायर किया था टू कीप इट रेलेवेंट आपको उसके नेक्स्ट वर्जन या उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एनी सॉफ्टवेयर.
कैरियर एडेप्टेशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स हमने देखे हैं, जिसमें आज अगर आप एज अ बिजनेस ट्रांसफार्मर के कैरियर जोन में ब्रॉडली फॉल कर रहे हैं एंड यू वांट टू बिकम अश्योरेंस एडवोकेट और वाइस वर्सा, सो व्हाट इज द प्रोसेस टू रियली मूव between the career zone or work in the multiple career zone at the same time. And that is important when we are talking about the sustainable organization, the organization who have a vision for the long term sustainability and growth. So these things are important for them, how we take it forward. I'll take you back quickly on the ACCA qualification. ACCA की qualification 12 competencies पे base करती है, और इन 12 कॉम्पिटेंसीज में कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं जो इसेंशियल हैं और कुछ इलेक्टिव हैं. सो अगर हम एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज की बात करें, रिगार्डलेस आप किस कैरियर जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, ये एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज आपके लिए जरूरी हैं. एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन. अगर आप इन कॉम्पिटेंसीज को, जो एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज हैं, दीज ऑल आर द सोशल स्किल्स, हाउ यू बिहेव, आपकी पर्सनालिटी, प्रोफेशनलिज्म, ये इससे रिलेट करती हैं, एंड दैट डज नॉट कैरी द टेक्निकल साइड ऑफ इट. और जो आपकी इलेक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं, दैट्स जो आप एट अ फंडामेंटल लेवल तक आपने सारी इकट्ठी पढ़ी होती हैं और प्रोफेशनल लेवल पे आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, दैट्स इंक्लूड डाटा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑडिट एश्योरेंस, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, corporate business reporting, financial management, which is more to do with the investment management, management accounting, जो आपके performance management से related है, and taxation as a one of a specialization. So अगर हम इन 12 competencies को देखें, तो कोई भी career zone जब आप opt करेंगे या किसी भी career zone में आप अपने आप को categorize करेंगे, तो इन्हीं competencies का एक combination है जिसको आप लेके चल रहे हैं. Why we need to understand के कैरियर जोन्स, अगर हम आज एक बात कर रहे हैं, तो व्हाई वी आर टॉकिंग इट टुडे. सो अगर हम ओवरऑल अपनी इकोनॉमी और बिजनेसेस को देखें, तो इकोनॉमीज जो हैं वो एक्सोनॉमीज में मूव कर रही हैं. एक्सोनॉमीज मीन जहां पे आपको आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ऑप्शन होती है. आप लीनियर ग्रोथ माइंडसेट से और लीनियर ग्रोथ पैटर्न से निकल के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं. अगर आज आप 10% ग्रो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप 100% एंड देन यू विल गो फॉर another 1000% increase, and that's quite possible. And why it's possible? Because right now हमारे पास कुछ ऐसे disruptors हैं market में, which are helping us or helping the overall shape of the economy to move away from the linear growth patterns, जिसमें data, IoT, AI, connected devices, people, quantum computing, these are the things which are disrupting the entire economy. और अगर हम की डिस्ट्रप्शंस देखें कि जिन एरियाज में डिस्ट्रप्शंस आई हैं, उसमें बाइंग बिहेवियर पे बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन आई है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग की साइड पे, सोशल इंटरेक्शन, मार्केट एक्सेस, हाउ यूजर रिस्पॉन्स एंड वैलिडेट वन ऑफ द थिंग्स. तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास एज अ की डिस्ट्रप्शन हमें नजर आती है. इसी तरह अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, जो हम फ्यूचर रेडी टैलेंट की बात करें, तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से 20 की एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग सोसाइटल इंपैरेटिव एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे बेस करते हुए दे आर 20 की एरियाज जो कि ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हाउ द फ्यूचर विल लुक लाइक एंड व्हाट वी शुड बी डूइंग. सो आपको उस रिपोर्ट में कुछ वे फॉरवर्ड भी मिल रहा होता है, बट देयर इज अ सर्टेन डिस्कशन. और अगर आप ACCA की वेबसाइट पे जाएं, पावर ऑफ फ्यूचर रेडी टैलेंट अगेन, सो यू विल सी 5 डिफरेंट कैरियर जोन्स, और हर कैरियर जोन के साथ आपको उसके रिसोर्सेज, जो एसोसिएटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी अवेलेबल होंगे. आज हम बात करेंगे डाटा नेविगेटर की, और इसके लिए अगेन गोइंग बैक टू फंडामेंटल, अगर हम 12 कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, तो वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपको एज अ डेटा नेविगेटर, इफ यू आर मूविंग इन दैट कैरियर जोन ब्रॉडली, सो वो कौन सी की कॉम्पिटेंसीज हैं जो आपको बहुत रेगुलरली इस सिनेरियो में रिफ्लेक्ट करती है. सो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, आप डाटा नेविगेटर को क्लिक करते हैं, तो वहां पे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा ACCA क्वालिफिकेशन में कैरियर जोन्स की एक्सपर्टीज, स्पेशलिस्ट जॉब रोल्स, पावर ऑफ डिजिटल की प्रोफेशनल इनसाइट, और पावर ऑफ एथिक्स की बात हम करेंगे, तो ये आपको वहां पे चीजें नजर आ रही है. Let's go to the data navigator as a career zone. So ethics and professionalism, one of our core competencies, so you cannot avoid that. ये हर चीज के सेंटर में, it's a core of the anything which you do. और जो आपको डार्क रेड में नजर आ रही हैं, these are the competencies you will be accessing more frequently.
जो lighter red में नजर आ रही हैं, you will still be accessing that, but may not be on an everyday basis, every week basis. और जो white में आपको नजर आ रही है, these are the competencies you rarely draw when you are acting as a data navigator. Data navigator is practically a role of a business partner जो कि आपको data के through enable करता है for forward looking analysis for decision support. आपके पास किसी किस्म का भी आपने data driven decision लेना है तो उसके लिए आपके पास data navigator का एक role होगा, somebody who is acting as a data navigator, and those guys will be enabling you in terms of how you should be making your decision. Again, going back to the competencies, 12 competencies की हमने बात की थी. As a data navigator, you will be drawing on the audit and assurance a little, advisory and consultancy पे बहुत ज़्यादा, data digital and technology जो एक specialization है उस पे आप बहुत ज़्यादा draw कर रहे होंगे, strategy and innovation की बात हो रही होगी, leadership and management, stakeholder relationship management, because that's what the data is all about, कि आपके पास जो information आ रही है और जो आप share कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, and how you really narrate your story. Governance, risk and control is very important once it's come to data. Data की integrity से लेके data की visualization तक, there is a system and the processes which you have to really exercise to make sure कि वो data की recording के around governance जो है और data की visualization तक जो governance है वो properly evaluate हो रही हो और वहाँ पे एक certain level of assurance. So financial management, that's mean the investment option or option analysis जो हम run कर रहे होते हैं, feasibility studies, तो उसमें भी ये चीज important होती है. Management accounting, which is more related with the performance management. So data navigator, a lot of performance related data jo hai, they accumulate that, they curate that data, and they try to create an insight out of this one. Then हम data navigator की एक broader definition देखते हैं. So अगर हम उसे देखेंगे तो adoption of the automation of technologies such as robotic embeds better control, faster processing speed, reduced cost, and the better quality of data. That's mean you can acquire smart data. That is आपके पास ज़्यादा बेहतर information आ रही होती है structured और unstructured way में. Exponential growth opportunities because you can provide a better insight. So as a data navigator, you can really access the exponential growth opportunities जब हम बात कर रहे होते हैं. Automation जो है वो बहुत सा time free कर देती है. अगर आपके पास data automatically curate या aggregate हो रहा है तो आपको बहुत सा डाटा एक्सट्रैक्ट करने में जो एफर्ट होती है वो नहीं करनी पड़ती. इसी तरह एज अ बिजनेस यू कैन टेल योर स्टोरी बेटर क्योंकि आपका डाटा जो है वो उसको सब्सटैंशिएट कर रहा होता है तो यू कैन टेल योर स्टोरी बेटर. ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो ओवरऑल जो आपकी बिग डाटा की कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर रही है. इसी तरह एज अ फाइनेंस टीम आप एक पावर हाउस बन जाते हैं टू प्रोवाइड एनालिटिक्स टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अक्रॉस द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है यू आर द वन हु इज प्रोवाइडिंग द विजिबिलिटी एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम टू रियली साइज इट. उसको आप एक बाइट साइज सॉल्यूशंस में या प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके उनके कोरिलेशंस देख सकते हैं कि अगर एक डाटा सेट आपके पास प्रोडक्शन से आ रहा है और एक सेल से आ रहा है तो आप उसकी एक कोरिलेशन किस तरह एस्टैब्लिश करेंगे व्हिच कैन हेल्प यू टू प्लान बेटर. राइट. सो पूरी वैल्यू चेन में जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसकी कोरिलेशंस आप लेके आते हैं. और फिर नंबर क्रंचिंग से जो है यू आर मूविंग एज अ डाटा नेविगेटर यू आर टेलिंग योर स्टोरी. आप अपनी नरेशंस जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास एक बेहतर विजिबिलिटी और विजुअलाइजेशन द वे यू प्रेजेंट डाटा यू कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव. जैसे इन्फोग्राफिक की बात होती है रेगुलर टेबल से ग्राफ में मूव कर जाते हैं. कोरिलेशंस जो हैं उनको आप बेहतर तरीके से स्टडी और विजुअलाइज कर सकते हैं. सो जस्ट टू समराइजिंग इट as a data navigator, once somebody is in a career zone of data navigator, so smart data se leke exponential growth opportunities or telling the story better, I think these are the key words which I would suggest कि आपके जहन में होना चाहिए. और उसके बाद जो आपकी कोरिलेशन है कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम अक्रॉस द फंक्शन आप एज अ डाटा नेविगेटर इसको बड़े अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते हैं. नंबर वन दैट्स व्हाट द वर्ड सजेस्ट बट यू कैन रियली create the visualization जो एक decision maker के लिए if you are a decision maker or you are assisting somebody for the decision so you can narrate it better through the visualization. अब अगर हम बात करें कि augmented analytics and algorithm जी किस तरह इस चीज को चेंज करते हैं कि आपके पास एक piece of information जो है वो flow कर रहा है वो डिजिटल मीडिया से flow कर रहा है वो आपके ERP सिस्टम से flow कर रहा है. How you are going to really help the organization
to understand it better. So ये एक important element है कि आप इसको करेंगे कैसे. सबसे पहले आपको एक business question चाहिए कि what we are trying to solve. ये एक बहुत important area होता है. जब तक आप problem properly define नहीं करेंगे, आप अपनी reality check में नहीं आ सकते. फिर based on the question, you will try to collect your raw data to answer that question. और फिर उस डाटा को आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे. अगर somebody who is familiar with the grow model, so grow model में आपके पास गोल सेट होता है, रियलिटी चेक होता है, ऑप्शंस एनालिसिस होते हैं और फिर एक विलिंगनेस होती है टू टेक एक्शन, जिसको हम लेसन लर्न में भी बात कर सकते हैं. सो यही ग्रो मॉडल जब आप ऑगमेंटेड एनालिटिक्स और एल्गोरिदम पे अप्लाई करते हैं, सो फर्स्ट यू हैव अ गोल कि आपका क्वेश्चन क्या है, डाटा जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो कलेक्ट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसका एक एनालिसिस रन करते हैं, एंड दैट विल लीड यू टू अंडरस्टैंड द करंट रियलिटीज. और फिर आप उससे जो इनसाइट जनरेट होती है उसकी बेस पे आप एक्शंस प्रिपेयर करते हैं. सो इनसाइट और रिपोर्टिंग आ जाती है उस सारे डाटा की, और जो लेसन लर्न है कि नेक्स्ट एक्शन आपने क्या करना है, वो एक्शंस जो हैं या वो ऑप्शन एनालिसिस जो है, यू कैन रियली कैप्चर दैट वन कि ये डाटा हमें ये स्टोरी बता रहा है और ये कोरिलेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इस कोरिलेशन का क्या मतलब है हमारे बिजनेस के लिए, इसको हम आगे कैसे लेके चलें. अगर हम फ्यूचर देखें तो ओवरऑल बैलेंस जो है फाइनेंस एक्टिविटीज का वो शिफ्ट हो रहा है. देयर आर 4 की रोल्स. अगर हम देखें हिस्टोरिकली फाइनेंस के लिए की रोल्स जो हैं, स्कोर कीपर विच इज मोर टू डू हाउ यू विल रिकॉर्ड डाटा, ईआरपी से लेके मैनुअल बुक कीपिंग से लेके ईआरपी और इवन द ऑटोमेटेड रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो सारा स्कोर कीपर के तौर पे आता है. डिलिजेंट केयर टेकर आपका स्टुअर्डशिप का रोल है, कम्युनिकेटर आपका रिपोर्टिंग का रोल है, बट द बिजनेस पार्टनर इज द वन ऑफ द रोल जो डिसीजन मेकिंग में आता है. और अगर आप आज देखेंगे वेयर द फाइनेंस एक्टिविटीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम, सो वो आपको नजर आएंगी डिलिजेंट केयर टेकर के रोल में, आपको नजर आएंगी स्कोर कीपर, दैट्स मीन समबडी हु इज कीपिंग द डाटा, वो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द कम्युनिकेटर जो कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं. लेकिन अगर आप आज से 5 से 10 साल आगे देखेंगे तो आपको ये रोल शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, more towards in a 3 year is going towards a business partner, but 5 to 10 years आपको significantly ये स्कोर कीपर का रोल, दैट्स मीन जहां पे आपने डाटा कैप्चर कर दिया, वो रोल आपका ऑटोमेट होता चला जाएगा, और आपका रोल एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मूव करेगा मोर टुवर्ड्स कि आपकी नरेशन, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो, आपका जो स्टुअर्डशिप का रोल है आप अपने डाटा के बेस पे उसको देख सकें, कोरिलेट कर सकें, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू एक्ट एज अ बिजनेस पार्टनर. आप अपने बोर्ड को एडवाइस कर सकें या बोर्ड मीटिंग में आप सजेस्ट कर सकें कि आपके डिसीजन क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. सो दिस इज द इवॉल्विंग रोल. और इस रोल में एज अ डाटा नेविगेटर आपके पास, अगर आपने अपने कैरियर जोन में या आपने अपने कैरियर प्रोग्रेशन में एज अ डाटा नेविगेटर किसी वक्त एक्ट किया हुआ है और यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट रोल, सो बिजनेस पार्टनरशिप में ये रोल बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा. सो इफ वी लुक एट द चेंज, सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट स्लाइड. आप जहां पे देख सकते हैं कि आपका रोल, करंट प्रैक्टिसेस, करंट एक्टिविटीज ग्रेजुअली मूव कर रही हैं टुवर्ड्स बिजनेस पार्टनरशिप्स. And the business partner means somebody who is assisting the organization very well in terms of uh, how the decision should be made. So we will come to the question later. अब दूसरा career zone जिसको हम touch करेंगे वो है sustainability trailblazer. इसी तरह if we go there, so you can see on the ACCA website जहाँ पे आपके पास future ready talent में you can click sustainability trailblazer और उसके related assets जो हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे. The core role of the sustainability trailblazer is the performance management. Somebody who is making decision and making sure कि overall stewardship का role, communicator का role, business partner का role collectively जब आप discharge कर रहे होंगे तो you will be more in the career zone of sustainability trailblazer. That's mean you are the one who is trying to establish the frameworks. You are the one जो कि emerging opportunity और external disclosure को जो stakeholders के लिए इस वक्त ever growing demand develop हो रही है उस पे काम कर रहे होंगे. आप management accounting को
फिट फॉर अ मल्टी कैपिटल वर्ल्ड। अगेन जब हम मल्टी कैपिटल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आपके नेचुरल कैपिटल की, यहाँ पे बात हो रही है आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल की, एचआर की, आपके रिलेशनशिप कैपिटल की बात हो रही है, और डेफिनेटली आपका जब हम नेचुरल कैपिटल की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट इज वन ऑफ अ की एरिया देयर। अगर आप सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर को देखेंगे तो 12 कॉम्पिटेंसीज में से अगेन एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म जो है दैट स्टे एट द मिडल ऑफ इट। टैक्सेशन इज द ओनली वन, एक ऐसी नीश है जिसपे आप एवरीडे बेसिस पे ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे इन कॉम्पिटेंसीज को। Otherwise, all 11 competencies you will be drawing on those on an everyday basis, because you are the one who is leading the organization and you are creating new opportunity, identifying new opportunity, and guiding the organization for the way forward. सो ये रोल्स हैं सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर के जब आप सी लेवल पे बोर्ड पे बैठे हुए हैं और यू आर एस्पायरिंग टू गेट देयर। सो दीज आर द कॉम्पिटेंसीज जो कि आपने ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन, चाहे आप हम एग्जाम की बात करें, चाहे आपकी ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो दीज आर द कॉम्पिटेंसीज यू हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द ACCA जर्नी। और अब इन कॉम्पिटेंसीज को when you are trying to deploy on an everyday basis, so you are practically in the career zone of sustainability trailblazer. What sustainability trailblazer, somebody who is in that career zone, what exactly they are looking at, इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो रेगुलेटर, इन्वेस्टर, कस्टमर और वाइडर स्टेक होल्डर से एक डिमांड है कि आपने वैल्यू क्रिएशन, आपका पूरा जो एक मॉडल है वैल्यू क्रिएशन का बिजनेस का, उस पर किस तरह काम किया है। और आप सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर नहीं करते, आप इस पूरे मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं और इस पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं और इसी के अराउंड डिस्क्लोजर्स लेके आते हैं। सो अगर हम बात करेंगे स्टेक होल्डर जो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं आपसे वैल्यू क्रिएशन मॉडल की, दैट्स मीन आपके 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल आपने उनको किस तरह डिप्लॉय किया और हाउ यू हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर द बिजनेस, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द एनवायरनमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन यू कैन ओनली प्रोवाइड इफ यू really understand the value creation model. अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो it starts from the seed which farmer is going to sow। अगर हम एक कॉटन की बात करें तो वहां से कॉटन की जो क्रॉप है उसकी प्रेपरेशन से लेके एंड द एंड कस्टमर जो एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वो सारा का सारा आपका वैल्यू क्रिएशन का पार्ट है। दैट्स मीन आपकी प्रोक्योरमेंट of cotton, then the processing of that into thread, then weaving, and then preparing it into apparel, and then bringing it to the market and making it available to a consumer. ये सारा एक आपका value creation process है जहाँ पे वो seed practically जो आप एक farmer के हाथ में था वो एक shirt या एक apparel की form में एक consumer के पास available है। और इसमें अकाउंटिंग फॉर बिजनेस की बात होती है, आप बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे होते। सो दैट्स मीन जितने प्रोसेसेस से आप गुजरे हैं उन प्रोसेसेस में क्या हुआ, वैल्यू क्रिएट हुई कि डिस्ट्रॉय हुई, एक्सप्लॉइटेशन थी या सपोर्ट थी। सो इस तरह के एटीट्यूड और वैल्यूज ऑफ द बिजनेसेस भी इसमें अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं। एंड दैट आपका प्लानिंग प्रोसेस जो है वो आपका प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ प्रोसेस, पीपल और सिस्टम को कनेक्ट करता है ताकि आप एक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर सकें। और इसका चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर के रोल में, बहुत दफा हम अपनी वैल्यू ड्राइवर्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। सो उन वैल्यू ड्राइवर्स की क्लैरिटी लेके आना भी सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर का एक बड़ा की रोल होता है। और फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो डिस्क्लोजर्स हैं, रिपोर्टिंग है, वो एक कोर रोल है यहाँ पे। और क्लाइमेट रिस्क टू सोशल इम्पैक्ट, जैसे अभी हमने बात की कि ये पूरी एक वैल्यू क्रिएशन मॉडल की बात करता है। सो उस पूरे मॉडल को अंडरस्टैंड करना और उसको अकाउंट फॉर करना और उसकी इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करना और स्टोरीज और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना और नरेशन प्रोवाइड करना, दैट्स अ इंपॉर्टेंट वन। सो प्रैक्टिकली अगर मैं अगेन टेक्सटाइल की जो हमने एग्जांपल दी है, सो योर एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी अबाउट दैट सीड व्हिच द फार्मर स्टार्टेड विद और उसकी कन्वर्जन टू द अपैरल, उसकी एक पूरी जर्नी और एक स्टोरी, कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि वो सीड किस प्रोसेस से गुजर के अपैरल तक मूव किया, और उस पूरी स्टोरी को एक प्रॉपरली रेगुलेटर्स को एक्सप्लेन करना, अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना, उसके फाइनेंशियल्स को एक्सप्लेन करना, उस प्रोसेस में जो वैल्यू क्रिएशन थी उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना एंड अगेन एक्सप्लेन करना, ये सारा का सारा रोल जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर के रोल का पार्ट है, इस कैरियर जोन का पार्ट है।
अगर अगेन हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल की, जैसे हमने अभी बात की थी, 6 टाइप ऑफ कैपिटल, आपका फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल लाइक इन्वेंट्री जब हम बात कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप एंड नेशनल कैपिटल, ये सारा आपका एज अ इनपुट एक बिजनेस मॉडल में जाता है, और फिर एज अ आउटपुट और एज अ आउटकम यही नए कैपिटल जो हैं वो क्रिएट होते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के मॉडल से गुजरते हैं, और यही कैपिटल जो है रीडिप्लॉय होना शुरू होता है। सो ये आपका एक, अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें, सो आप 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, और फिर एक कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर होती है, एंड देन यू कन्वर्ट दैट इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल एंड रीडिप्लॉय दैट। सो ये पूरा एक एनवायरनमेंट और एक वैल्यू क्रिएशन मॉडल जो है ओवर द पीरियड चलता चला जाता है। इसी तरह यूएन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कंट्री लेवल पे कमिट किए होते हैं। इन गोल्स को अचीव करने के लिए भी बिजनेसेस का एक बड़ा मेजर रोल होता है, और उस रोल को डिस्चार्ज करने के लिए अगेन आपके लिए जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस इन गोल्स में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसकी रिपोर्टिंग के लिए नॉर्मली ईएसजी का फ्रेमवर्क यूज होता है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का जो रिपोर्टिंग के टूल्स हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन उन इनिशिएटिव पे पहले कमिट कर रही होती है और फिर उसको report कर रही होती है. That's the way the business contributes, or otherwise they can have a other model to contribute as well. But country level पे ये sustainability development goals हैं जो पाकिस्तान ने भी commit किए हुए हैं, बाकी दुनिया ने भी commit किए हैं. अगेन फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की अगर हम बात करें तो वहां पे भी आपको एक सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर का रोल नजर आएगा, विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट अल्टीमेटली। और आपकी स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें भी आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि आपका ओवरऑल पॉलिसी और लीगल, टेक्नोलॉजी, फिजिकल जो रिस्क है उनको आप किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे। अगेन गोइंग बैक टू टेक्सटाइल, European Union is working on a one of an initiative called sustainability textile. Sustainability textile is something which has a great support from the world. That's mean जो textile जो apparel आप consume कर रहे हैं, जिस value creation process से वो आ रही है, उसमें exploitation ना हो, child labor ना हो, बेहतर वर्किंग कंडीशंस हों, आपके पास एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस हों, अगर वेस्ट वाटर है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, जो वेजेस हैं वो प्रॉपरली जा रही हों, जो जेंडर का एजेंडा है, दैट्स मीन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल द जेंडर्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। दैट्स मीन इंक्लूसिविटी जो है वो भी उसमें सस्टेनेबिलिटी टेक्सटाइल के एजेंडा में आता है। अगर हम इन रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आज, दैट्स मीन हमारे यूरोपियन यूनियन में जब भी ये लॉ which will be available और ये guidelines और principles apply होना शुरू हो जाएंगे, which is another year or 3 years, that's a maximum time frame they are looking at. So कोई भी ऐसी textile industry जो कि compliant नहीं होगी इन तमाम areas के साथ, they may not be able to export that. So that's the importance of understanding the environment and the overall जो आपका SDG का एक एजेंडा है उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए लिमिट होती चली जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड इफ वी डू नॉट प्लान इट नाउ एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। अगेन a role of sustainability trailblazer has to discharge. Just to summarize it, where we stand in terms of the way forward, सबसे पहले तो just a quick summary, 5 career zones अगर हम बात करें in the digital age: the assurance advocate, the business transformer, the data navigator, the digital playmaker, and sustainability trailblazer. In सबको if we put together, it's a combination of the same 12 competencies, and it's a deployment of those 12 competency on an everyday basis. उन्हीं 12 competencies के combination के साथ आप broadly एक certain career zone में enter होते हैं और उस career zone के जो minimum requirements हैं उनको पूरा करते हुए then you excel in that. So that's mean जो उस competencies जो उस career zone के लिए required है, number one, first you have to go back and do a gap analysis कि आप किस career zone में fall करते हैं broadly, और उस कैरियर जोन की जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें से कितनी कॉम्पिटेंसीज आप एवरीडे बेसिस पे यूज कर रहे हैं, उन कॉम्पिटेंसीज में से कौन सी ऐसी हैं विच यू हैव टू रियली डेवलप फर्दर ताकि आप अपना रोल बेहतर डिस्चार्ज कर सकें। दूसरा आपका इनिशिएटिव हो सकता है कि आज यू आइडेंटिफाई कि आप बिजनेस ट्रांसफॉर्मर के कैरियर जोन में फॉल कर रहे हैं बट यू वांट टू मूव टुवर्ड्स द डिजिटल प्ले मेकर और सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर। सो इसका मतलब है वो कौन सी एडिशनल कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको आपने फ्रेशन अप करना है। आई वुडंट से एक्वायर करना है क्योंकि एज अ ACCA आप ये 12 कॉम्पिटेंसीज एक्वायर कर चुके हो। सो इसमें सिर्फ आपने उसको फ्रेशन अप करना है एंड देन यू हैव टू यूज दैट ऑन एवरीडे बेसिस।
वे फॉरवर्ड में कुछ सजेशंस आएंगी हमारे पास, लाइक आपके पास क्या रोल, हाउ यू विल गेट देयर, इस कैरियर जोन में किस तरह आप विद इन द कैरियर जोन किस तरह नेविगेट कर रहे होंगे. अडेप्टेबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट. गेटिंग इनटू टेक्नोलॉजी इज अ इंपॉर्टेंट वन. रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी. रीलर्न, लाइक अनलर्न, रीलर्न. और आपके पास जो लर्निंग एवोल्यूशन की हमने शुरू में बात की थी कैरियर जोन की, वो इंपॉर्टेंट है. वर्क योर ब्रांड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आपको आइडेंटिफाई करें आप हैं कौन, आप किस कैरियर जोन में फॉल करते हैं, और जिस कैरियर जोन में आपका ख्याल है आप फॉल करते हैं, कि क्या आपकी सराउंडिंग में जो प्रोफेशनल्स हैं दे आर ऑल्सो एडवाइजिंग यू द सेम, वो आपको यही फीडबैक दे रहे हैं. और अपने ब्रांड पे काम करें. लेट्स आइडेंटिफाई के हु यू वांट टू बिकम, हु यू आर टुडे एंड व्हाट डज इट मीन गोइंग फॉरवर्ड. आपको कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, कौन से एडिशनल नेटवर्क में आपने एंटर होना है, अपने रिलेशनशिप कैपिटल किस तरह डेवलप करना है अपना. सो अपना एक ब्रांड डेवलप करें. सो आपका जब नाम आए तो पीपल कैन आइडेंटिफाई हु यू आर इन टर्म ऑफ द कॉम्पिटेंसी रादर देन ओनली द नेम. रीच आउट अगेन द नेटवर्क. डाटा बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना. फाइंड अ स्पॉन्सर हु कैन कीप गिविंग यू द फीडबैक ताकि आप यू कैन लर्न फ्रॉम अदर. सीवीज जो अब हैं दैट्स नॉट बेस्ड ऑन द स्टोरी कि आपका हिस्ट्री क्या रही हुई है, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है. इट्स ऑल अबाउट व्हाट स्किल्स यू हैव एक्वायर्ड एंड व्हाट अचीवमेंट यू हैव मेड यूजिंग दोज स्किल्स. सो सीवी भी जो आपका है उसको दोबारा से देखें और उसको रिव्यू करें. एंड ट्राई टू स्टे इन द जोन, जो जो चीज आप इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो आपके एवरीडे लाइफ में आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है. सो try to navigate your career into the areas or into the industry which you really enjoy. So the question which I would like you to have on an everyday basis is, number one, am I doing enough to stay relevant ahead of curve? If you have got those professional insights, uh, क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी आज की जो एफर्ट है, is it good enough to keep you ahead of the curve and to keep you relevant? And then the other question, do you really know, do I know that what kind of future I want to build for myself and people around it? अगर हम एक broader example देखें तो आप किस career zone में operate करना चाहेंगे, and why you feel that this career zone is more close to what you want to choose, like you really like it. Some people will thrill on the data navigation, where the other people might want to stay more in a business transformer role, and some would like to aspire to get into the sustainability trailblazer. So figure out कि आप किस career zone में operate करना चाह रहे हैं, not because there is a different kind of money or different kind of influence, but because you really love doing that. So career zones के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा criteria. It's not only the career progression, the roles, position, and the money. It's whether you really love it. And then a question which I'll leave you with: are you thinking ahead? Are you really planning कि आपने अपने लिए कैसा future develop करना है, and how you are going to progress in terms of your own career, in terms of your competencies, in terms of your skill set, and most importantly, in terms of how you are going to contribute back to society, something you are blessed with in terms of talent, in terms of education, in terms of earning potential, what you are doing to really contribute back to society. So are you thinking ahead? So I'll take a break here and I'll hand over to Rashid for any questions. Sure. Thank you very much, Sajid. Another very insightful session, and we have some questions that we can start answering. So the first question is more on sustainability trailblazer. The question is, with more organizations focusing to monitor their impact on environment, how do you see consultancy jobs evolving at the Big Four, especially in Pakistan? आई थिंक मैं एक मिनट के लिए इसमें से बिग फोर को साइड पे करके लेट्स ट्राई टू सी कि आपके पास कंसल्टिंग एरिया कौन सा इवॉल्व हो रहा है. डेफिनेटली आपके पास ईएसजी का एक बहुत बड़ा कंसल्टिंग एरिया डेवलप हो रहा है, क्योंकि ईएसजी के पूरे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि डेवलप होने होते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, इनिशिएशन, मॉनिटरिंग, गवर्नेंस एंड रिपोर्टिंग तक का पूरा एक साइकिल है. ये कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज बिग फोर में भी एग्जिस्ट करती हैं, इंडिविजुअली भी आप दे सकते हैं, और ये आप क्रॉस बॉर्डर भी दे सकते हैं. दैट्स मीन पाकिस्तान से बैठ के इफ यू हैव बिल्ड योर ब्रांड अराउंड ईएसजी, तो आप यहाँ बैठ के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी असिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ फ्रेमवर्क एंड द स्टैंडर्ड.
और उसके बाद उसका एक इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है जो आपने डेवलप करना है, और उसका एक फॉलो अप है ताकि उसकी एग्जीक्यूशन हो रही हो. तो आई वुड से ESG इज अ ग्रेट एरिया टू वर्क इन टर्म ऑफ द कंसल्टेंसी, जब आप सोशल इम्पैक्ट वाले एरियाज पे या इम्पैक्ट एनालिसिस वाले साइड पे जाना चाहेंगे. एंड देन यू कैन ऑल्सो लिंक इट बैक विद द UN SDG. सो जो कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपने डेवलप किया है, you can also let the government know, the government ministries, or there are certain department and the ministry who are very keen, वो भी आपकी इस contribution को at a country level report कर रहे होंगे for the attainment of those SDGs. Sure. Thank you very much, Sajid. Very exciting career opportunities exist in this career zone. So the next question is, many companies are thinking to link the executive pay with organization sustainability goals. Do you see more professional accountants occupying the CEO position due to their comprehensive knowledge of organization sustainability journey? I would say that I wouldn't talk about the future. I'm seeing a lot of professional accountant leading the organization as a C level, at the board level, and as a CEO as well. आपको पाकिस्तान में भी बहुत सी organizations मिलेंगी, और बहुत सी organization आपको globally भी मिलेगी जहाँ पे एक finance professional as a CEO act कर रहा है. And there is a reason behind it. Going forward, आपके पास, और अगर आप history भी देखें last 10 years की, दो तीन areas हैं जो बड़ी quickly emerge हुए. एक एरिया आपका है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा एरिया है रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा एरिया आपका है द डेटा, द इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. सो एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, the accountants and the finance qualified people stand a better chance to understand that information, to understand those financial transactions, understand the compliance need on a everyday basis, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो रही होती है. अगर आपको टोटल रिलायंस एक एक्सटर्नल पार्टी पे है या डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म पे है, तो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी क्विक नहीं हो पाएगी. सो फाइनेंस एक टाइम पे नंबर 3 नंबर 4 पे द मोस्ट डिजायर्ड क्वालिफिकेशन होती थी इन टर्म ऑफ द CEO. आज अगर हम देखें तो ये सेकंड मोस्ट लाइक रिक्वायर्ड स्किल है फॉर अ CEO. द फर्स्ट इज स्टिल रिमेन कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में हैं और अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं, द फर्स्ट स्टिल रिमेन द वन दैट यू शुड बी अ टेक्नोलॉजी या उस इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हो. लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, द FMCG में देखेंगे, तो वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती इस टाइप की. तो वहां पे फाइनेंस के, या आप इवन बैंकिंग में, टेलकोस में, वहां पे आपको बहुत से एरियाज नजर आएंगे जहां पे फाइनेंस प्रोफेशनल बजाते खुद वो बेसिक इंडस्ट्री नॉलेज की बेस पे लीड कर रहे होते हैं. So finance, definitely we are seeing a lot of people who are leading the organization using the finance skill, and it's becoming and more desirable from the board side as well. So अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो वो सिर्फ CEO का एक्सपोजर नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड का एक्सपोजर है. Absolutely. There's a growing trend of finance professionals leading the organizations. जहाँ हमने CEO की बात की, Sajid, the next question is about data navigator. How do you see the role of CFO evolving with finance becoming more involved in data-driven decision making? For the last 4 or 5 years, I always suggest that the term CFO may not exist going forward. There will be a chief data scientist or a chief data officer will be available जो कि इसको लेके चल रहा होगा. Practically within the finance और CFO के रोल में जो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. आपके पास फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको कोरिलेट करते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट, और उसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कंप्लायंस इम्प्लीकेशन है, उन सबको आप लेके आगे चल रहे होते हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड, जब आपके पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, इवन द कस्टमर सेंटिमेंट्स की अगर आप बात करें, तो हमें एक कमर्शियल फाइनेंस का रोल नजर आता है जहां पे digital agencies जो हैं, they use the capability set of the finance professional to understand the sentiment of customer using the data set, and correlate with that production and the product development and the sales and the supply chain cycles, कि वहां पे कहाँ पे gaps आ रहे हैं और कहाँ पे वो deficiencies हैं और initiative ले सकते हैं. So yes, we going forward we see that the CFO, if even the name remain the same, they will be more running into the data navigator and the sustainability trailblazer के जो competency set है उसको deploy कर रहे हैं.
Right. Thank you, Sajid. Exciting times ahead for all finance professionals. The next question is, can you identify some analytical tools that professional accountants should master? Because you mentioned कि analytical tools पे बहुत ज़्यादा काम होगा in the future. So, can you identify some tools for our audience today? I think Power BI is the great one to start with, and definitely अगर आपने ज़्यादा technical side पे जाना है तो they are the technologies and even आपको ऐसे platforms भी मिलेंगे where you can develop more and more. But the Power BI and Excel is the one which you should start with and try to create those correlations using the basic functionality. Power BI is quite a powerful tool जब आपके पास data की बात हो. Sure, thank you very much, Sajid. And to develop all these in demand tool sets, mindsets, and behaviors, you have to stay connected with ACCA. On our CPD calendar every year, we make sure कि हम आपको इन skills पे train करें, and you have access to all world-class learning resources. So make sure आपका My ACCA is fully up to date, your contact details are up to date, so you stay connected with your global network of exciting support that is available for you. Next question, Sajid, is what should the regulators or the public sector organizations in general be doing to ensure the workforce understands the evolving sustainability frameworks and trail the blaze? पब्लिक सेक्टर किस तरह सस्टेनेबिलिटी के मैदान में आगे बढ़ सकता है? Public sector में दो तीन opportunities होती हैं. There are one opportunity where the individual take then an initiative. Like आज के दौर में अगर हम बात करें as an individual and I decide to acquire a certain competency, knowledge or training. So मेरे पास वो online available है. So I don't have any excuse why I should not go for that if I want to. So पहली चीज individual initiative पे आती है. दूसरी चीज हमारी आती है जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप और उनको सजेस्ट करना कि व्हाट काइंड ऑफ रोल दैट पब्लिक सेक्टर इज डिस्चार्जिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम एक रेगुलेटर की बात करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अराउंड द डाटा जो है वो बहुत जरूरी है कि हाउ द डाटा इज फ्लोइंग इन और उस डाटा को किस तरह वो कोरिलेट और मैप कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्री. अगर हम एक रेगुलेटर जो कि और एससीपी की अगर हम बात कर लें या स्टेट बैंक की हम बात कर लें या हम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें या एजीपी की बात करें तो वहां पे या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो वहां पे आपको एक डाटा का एक पूरा फ्लो नजर आ रहा होता है. उस डाटा को कंपेयर करना, एनालाइज करना, एक्वायर करना, ट्रांसफर करना, एक्सट्रैक्ट करना, वो सारा एक सर्टन कॉम्पिटेंसी तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपके पास आता है. तीसरा एरिया जो पब्लिक सेक्टर में एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है वो होती है डेवलपमेंट एजेंसीज. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डेवलपमेंट एजेंसी ब्रिंग एंड फंड दोज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी सेट. सो आई थिंक अगर कोई भी ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए इंडिविजुअल जहाँ पे आपके पास एक डेवलपमेंट एजेंसी ने कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया तो डू पार्टिसिपेट इन दैट. नॉर्मली वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो नेक्स्ट 3 to 10 years की बात हो रही होती है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है गिवन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. बट आई थिंक नॉर्मली दोज आर वेरी वैल्यूएबल. हमारे रेगुलेटर्स में अगर आप रिसेंटली लास्ट 3 to 5 years में देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस 3 to 5 years, वहां पे बहुत सी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस हमें देखने को मिला है जहां पे उन्होंने रेगुलेशंस भी चेंज किए हैं टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अराउंड द सोशल इम्पैक्ट्स और इम्पैक्ट एनालिसिस और वैल्यू क्रिएशन मॉडल को फर्दर ड्रिल डाउन करने के लिए. और उसके लिए उन्होंने इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग भी की है जहां पे द पीपल हु विल गेट दैट इंफॉर्मेशन हाउ दे आर गोइंग टू यूज एंड कोरिलेट दैट. सो ये चीजें हमें नजर आ रही हैं पब्लिक सेक्टर में ब्रॉडली. लेकिन इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो है दैट आई ऑलवेज सजेस्ट कि वो सबसे स्ट्रांग होता है क्योंकि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है व्हाट यू रियली वांट टू लर्न एंड हाउ यू वांट टू डिप्लॉय. कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नया स्किल डिप्लॉय करने से नहीं रोकती और एक्वायर करने से भी नहीं रोकती. सो आई थिंक just like a private organization, public sector organization have got the same opportunity for individual to go and spend time and effort. अब कॉस्ट बहुत रेलिवेंट नहीं रह गई हुई. कॉस्ट नॉर्मली इन क्वालिफिकेशन और इन स्किल्स की बहुत कम हो गई हुई है गिवन द ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट. Sure. Thank you very much, Sajid, for that answer. And there is nothing that can limit you. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी करियर जर्नी में है कि you take the maximum benefit out of your global network. और इसी के लिए ACCA has recently refreshed our ACCA mentoring program. तो तमाम members और affiliates please
make sure that you are staying connected with your global network and take a part in our global mentoring program, because we know that our members have a wealth of knowledge to share with each other and with our affiliates. So the ACCA mentoring program aims to make impactful connection that provides opportunities for personal and professional growth. Iski details are available on our website, so you can go to accaglobal.com, and in the members area, you'll find more details on how you can get involved and take a benefit of ACCA mentoring program. So Sajid, we've reached the end of this session, or since it was the finale of the entire series. So I would like to hear from you some final words of wisdom that you want to relay to our members and future members who joined us for this series. I think number one, first, I always suggest that कि आपके पास 12 competency set है, go and review which competencies you are using on an everyday basis. ACCA के competency framework या performance objective का जो document है, that's really provide you the examples कि जहाँ पे आप इसको identify कर सके कि ये competencies किस level पे आप reflect कर रहे हैं. Number two, try to broadly categorize yourself कि आप किस career zone में fall कर रहे हैं, or whether this is a career zone you want to progress, or you want to transition from that career zone to the other career zone, or you want to work in multiple career zone, which is a little difficult sometime when you try to do that. But given that कि आपके पास 12 competencies exist करती हैं, उसका कोई भी combination जो है, you can, it's your decision how to do that. So gap analysis करें, take action around it कि जहाँ पे आपको नजर आता है there is a gap, and use ACCA resources really for your own personal development, and that will ultimately help you to improve your earning potential, but most importantly help you to contribute better to your client, to your organization, and to the society. And definitely it will help us to improve the economic growth of Pakistan and more inclusive growth of Pakistan as well. Sure. Thank you very much, Sajid. And आपने time निकाला and you delivered this excellent series. And people who want to learn more about exciting career opportunities, please you can go to jobs.accaglobal.com, which is the link to ACCA job board. On the job board, we have a dedicated section for career advice. वहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की career advice मिल सकती है. So make a habit, bookmark कर लें इससे global job board को, ताकि आप एक तो you have access to all the career opportunities that exist, और इसके अलावा आपको अगर career advice चाहिए, so you can also take it from there. और जैसा सजीद ने mention किया, अगर आपको career zones के बारे में मज़ीद जानना है, so you please visit accaglobal.com. वहाँ पे हमारा professional insights के एरिया पे जाके you can go to future careers की report, which is available free of cost, और उसको आप मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं. And if you still have any questions, feel free to reach out to ACCA team, and please make sure all your details on my ACCA is up to date, क्योंकि हम regularly email करते हैं, SMS करते हैं. We keep you up to date on all our upcoming exciting interventions and programs. So make sure you don't miss those out. So stay connected with ACCA. And with that, we close this session, and we encourage you to stay connected with your global network. Enjoy the rest of the day and have a good day. Bye bye.